Assalamualaikum dear students. This is for class 9th metric, subject physics, chapter number 5, session number 4, attachment. Here it is problem 5.1 of our book exercise. It is on book page number 84. Draw the representative lines of the following vectors. Number 1, force of 15 Newton making an angle of 60 degrees with x-axis. Here we are given vector force and it is 15 Newton. With respect to x-axis it is making an angle of 60 degrees. सबसे पहले हमें अपने पास डायरेक्शंस शो करनी है. नॉर्थ, साउथ, east, west. This is also y-axis. North and east is also x-axis. If we take reference axis here. Now choose a suitable scale. यहाँ पे हमने अपने वेक्टर फोर्स को 15 न्यूटन शो करने के लिए 3 न्यूटन इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर लिया. Then our 15 Newton will become 5 centimeter. Now we have to draw a vector in direction of 60 degrees with respect to x-axis and its length will be 5 centimeter. So we have taken here north, south, east and west. It is also x-axis and we have denoted this with y-axis. Now with the help of protractor, take 60 degrees with respect to x-axis. Here we have taken 60 degrees with respect to x-axis. Then draw with the help of scale 5 centimeters in the direction of 60 degrees. Here we have taken 5 centimeters because हमें अपना वेक्टर फोर्स 5 सेंटीमीटर का ड्रॉ करना है. 5 सेंटीमीटर with respect to x-axis it is making 60 degrees. So here it is the representation of our vector, given vector. Now here is problem 5.2. A body moves 5 km towards east from a fixed point A and reaches a point B. From B it covers 3 km towards north and arrives at a point C. Find the distance and direction of the displacement. Here we are given our magnitude with their directions. So number 1 vector is given 5 km towards east. Now here is group problem 5.2. A body moves 5 km towards east from a fixed point A and reaches a point B. From B it covers 3 kilometers towards north and arrives at a point C. Find the distance and direction of the displacement. Now here first of all सबसे पहले हमने यहाँ पे अपनी डायरेक्शंस शो की, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. Then we have to mention 5 km towards east. Number 1 vector is 5 km towards east. Number 2 3 km towards north. Now here I have drawn vector A. The scale we have to choose a suitable scale so that we can draw our vectors.
हमने एक ऐसा स्केल लिया जिसमें 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, देन 3 किलोमीटर विल बिकम 3 सेंटीमीटर एंड 5 किलोमीटर विल बिकम 5 सेंटीमीटर। एक ऐसा स्केल चूज़ करेंगे हम जिसमें हमें अपने वेक्टर्स को ड्रॉ करना पॉसिबल हो। नाउ हियर वेक्टर 1 इज ड्रॉन। Initial point A, final point B, and the displacement vector is equals to 5 centimeter. Here we have shown S1 for our displacement vector because the body is moving from point A to point B. It is displacement vector 1 is equals to 5 centimeter because it has travelled 5 kilometer towards east. हमने इस वेक्टर को ईस्ट डायरेक्शन में या लॉन्ग एक्स एक्सिस ड्रॉ किया है। देन वेक्टर 2 यहाँ पे बनाया गया है और ये है जिसमें ये बॉडी मूव कर रही है 3 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। नॉर्थ डायरेक्शन हमने ड्रॉ की अलॉन्ग वाई एक्सिस जिसमें हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या वेक्टर 2 3 सेंटीमीटर हमने ड्रॉ किया इन आवर स्केल according to our chosen scale. 3 kilometer is equals to 3 centimeter. Now join these two vectors according to head to tail rule. हमें ये दोनों वेक्टर यहाँ पे अटैच करने हैं। Now here is our vector diagram. East, west, north and south direction. East is also along x-axis. Now the first vector is 5 सेंटीमीटर अलॉन्ग ईस्ट। यहाँ पे हमने पहला वेक्टर ड्रॉ किया। सेकंड वेक्टर नॉर्थ में हमने ड्रॉ किया 3 सेंटीमीटर। किस तरह कि फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकंड वेक्टर की टेल ज्वाइन की। उसके बाद हमने रिजल्टेंट वेक्टर लेने के लिए फर्स्ट वेक्टर की टेल के साथ अपने रिजल्टेंट वेक्टर को ज्वाइन किया लास्ट वेक्टर के हेड के साथ। देन मेजर दिस रिजल्टेंट वेक्टर, हमारे इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को रिजल्टेंट वेक्टर को हमने मेजर किया। इसकी लेंथ हमारे पास आई 5.8 सेंटीमीटर। नाउ मेजर बिकॉज दे आर ऑल्सो आस्किंग अस, वो हमसे पूछ रहे हैं डायरेक्शन भी हमें मेंशन करनी है। सो विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर आपने इसका एंगल मेजर किया। और ये हमारे पास आ रहा है 30 डिग्रीज। हमने 5 सेंटीमीटर हमने इस वेक्टर को ड्रॉ किया। इसकी लेंथ आई 5.8 एंड द एंगल थीटा इज इक्वल्स टू 31 डिग्रीज अलोंग विद ईस्ट नॉर्थ। नाउ द रिजल्टेंट वेक्टर वी हैव टू कन्वर्ट this 5.8 into kilometers to find the displacement of that body जो उसने पॉइंट A से पॉइंट C तक पहुंचने में कवर की है। पॉइंट A से पॉइंट C तक पहुंचने में जो इस बॉडी ने अपनी डिस्प्लेसमेंट की है वो हमें मेजर करनी है। वो हमारे पास आई है 5.8 सेंटीमीटर्स। तो हमारे पास क्योंकि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर तो 5.8 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 5.8 किलोमीटर। द आंसर इज रिजल्टेंट वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज 5.8 किलोमीटर्स एंड एंगल इज 31 डिग्रीज। बुक प्रॉब्लम 5.3। A man drives his car 5 kilometers east of his starting point. Then he travels 10 kilometers south and reaches a point. From here he travels 15 kilometers towards west and reaches another point. Finally he travels 20 kilometers towards north. Find the net displacement of the man from where he started. Now look here, we are given 4 displacement vectors. A man drives his car 5 kilometers east. First displacement vector is 5 kilometers towards east. Second, he travels 10 kilometers south. This second displacement vector, S for displacement vector and F denotes force. Here displacement vector is given, so we are denoting S for displacement vector. 10 kilometers towards south. Third, 15 kilometers towards west.
third displacement vector 15 kilometer towards west. Fourth vector 20 kilometer towards north. Now first of all we have drawn here directions with compass headings. North, south, east is always on the right, and here is west. East is also along x-axis and north is along y-axis. The scale is, we have to choose sensibly our scale. Here we have chosen 5 kilometer is equals to 2 centimeter. Then 10 kilometer will be 4 centimeter, and 15 kilometer will be 6 centimeter, and 20 kilometers will be 8 centimeter. Now we will draw our displacement vectors according to our certain scale, this given scale. Now we have drawn here first vector 2 kilometer east, and in our chosen scale 2 kilometer 5 kilometer will be 2 centimeters. So we have drawn with the help of our scale 2 centimeters towards east. Second vector 4 centimeter towards south. Third displacement vector 15 kilometer towards west. So it will be 6 centimeter towards west. And the fourth vector is 8 centimeter towards north. Now how we will draw and get net displacement of the man? Here we have drawn again our directions: north, south, east and west. Now draw first displacement vector. First displacement vector 2 centimeters. Then second displacement vector towards south 4 centimeter. Third displacement vector 6 centimeter towards west. किस तरह से ड्रॉ किए? फर्स्ट वेक्टर की हेड के साथ सेकंड वेक्टर की टेल ज्वाइन की, थर्ड वेक्टर की टेल को सेकंड वेक्टर के हेड से ज्वाइन किया. लास्ट वेक्टर इज फोर्थ वेक्टर 8 सेंटीमीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ. नॉर्थ में हमने चौथा वेक्टर ड्रॉ किया सेम वे में हेड टू टेल रूल से कि फोर्थ वेक्टर की टेल थर्ड वेक्टर के हेड से ज्वाइन की. नाउ हाउ यू विल गेट योर रिजल्टेंट वेक्टर आर? इन दिस केस रिजल्टेंट वेक्टर डी और रिजल्टेंट वेक्टर एस. We will draw a line from the tail of the first vector to the head of the last vector. Here I have drawn this resultant vector, displacement vector, and then measure the length of this net displacement. It is 5.8 centimeters. Now again check its angle, direction. What is its direction? Direction is with the help of your protractor. Measure the angle between north and west. It is 45 degrees. So the man drives his car towards northwest and the direction is northwest and the angle is 45 degrees. Now how you will get the net displacement? In this case 5.8 centimeters. Now convert it back to our kilometers and then divide it with our chosen scale. You will get your net displacement. In this case 14.5 kilometers is the net displacement of the man in his car. Problem number 5.6. Determine completely the resultant displacement vectors in these cases. Number 1, x component is equals to 5 kilometers. Now this is the displacement vector along x-axis is 5 kilometers and y component is 3 kilometers. Now the information given us in our problem is Sx. If it is a force vector, then you will write Fx, and in this case it is displacement vector, so we are denoting displacement with letter x. Sx is equals to 5 kilometer. Displacement along y-axis is 3 kilometers. Displacement find करनी है और हमें इसका एंगल फाइंड करना है थीटा.
Now the formula is f is equals to root of fx square plus fy square. In this case, displacement vector is equals to root of sx square plus sy square. S is equals to root of, by putting the values of these two, you will get root of 34. Displacement vector root of 34 is 5.38 kilometers. Now the resultant displacement is 5.38 kilometers. Now we have to find theta, and we know that the formula is tan inverse sy divided by sx. In this case, by putting the values of these two, tan inverse 3 divided by 5, tan inverse 0.6, and the value of 0.6 in tan inverse is 31 degrees. So the angle between these two components is 31 degrees. I hope that it will help you understand these problems and do the others which I have not done. Solve them in your copy.